कंटिन्यू। सो यहाँ पे हमने बात की कि कैसे 3 मेजर फैक्टर्स है जिनकी वजह से स्नोफॉल नहीं हो रही है अभी। वी कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे बात हो रही है गोइंग सोलर की। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम निकाली है, दैट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें कि हम बात करें। एक से तो यहाँ पे बात हो रही है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की, जिसमें हम रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब पहले की टारगेट्स की बात करें तो पहले का टारगेट था 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर विल बी इंस्टॉल्ड बाय 2022, जिसमें कि 40% ऑफ दिस एनर्जी विल कम फ्रॉम रूफ टॉप इंस्टॉलेशंस। बट जो टारगेट है, दो द कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हैज मेड appreciable strides, but in the past 10 years it missed the 100 gigawatt target, जो कि कंप्लीट हमारा नहीं हो पाया। एंड करंटली जो रूफटॉप इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है इट इज 12 गीगावाट्स। तो यहाँ पे जिस बात हो रही है कि अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लेवल पे हम बात करते हैं तो वो एक अनअट्रैक्टिव सेक्टर बन जाता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल पावर सोर्सेस से एनर्जी जनरेट हो रही है उस पर सब्सिडीज मिलती हैं, एंड जो रेन्यूएबल एनर्जीज का सेक्टर है उस पर ज्यादा सब्सिडीज अभी नहीं है, तो हमें उसके साइड भी देखना चाहिए। एंड उसके अलावा कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो वो भी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि वो कमर्शियल कंज्यूमर्स उन्हें मिले, rather than just गोइंग rather than just targeting individual households या फिर vendors। इसके अलावा गुजरात, जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इट इज द स्टेट विद द मोस्ट रूफटॉप इंस्टॉलेशंस एंड इट इज आल्सो डीलिंग विद दीज इश्यूज एंड आल्सो with aggressive Okay, I will add awareness one campaign. point. First of all, Ministry of New and Renewable Source of Energy. It is promoting this scheme, Pradhan Mantri Suryodaya Yojana. And second, why we are promoting that? To make the people aware regarding the solar uses. Second, to give incentive to the people for the installation of the rooftop so that they can sell the solar energy to the grid and they can earn extra money. Third would be India's target to achieve the target of the Panch Amrit. इसलिए हम लोग कर रहे हैं। एंड हाँ, fourth important point, state discom, that is distribution company, power distribution company, is already facing challenges of debt crisis. To mitigate that crisis, we are promoting specific decentralized formation of the rooftop solar installation. तो ये 3-4 एरिया। Okay, we have taken up this one, artificial skin। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं impact of cold waves on community well-being। Basically physical strain के साथ psychological strain, mental strain भी आता है cold waves के साथ। prolonged exposure to extreme cold can lead to hypothermia। hypothermia एक ऐसी condition होती है जहाँ पे body loses heat faster then it generates it, and it results in shivering, confusion and potentially life threatening consequences। रेस्पिरेटरी इश्यूज भी होते हैं, उसके अलावा जैसे हमने बात की फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। इसके अलावा सैड की यहाँ पे बात हो रही है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर दैट कैन सेट इन व्हेन लो विजिबिलिटी एंड वेदर रिलेटेड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस व्हिच लीड टू लैक ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की इंपॉर्टेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं, लैक ऑफ सनलाइट से सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सो इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन फॉर मेंटल हेल्थ तो कल ऑल्सो। साइंस वाले सेक्शन में पढ़े थे कि लैक ऑफ सनलाइट लीड्स टू लेस विटामिन डी, एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, एंड हायर फॉर्म ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस को रिकेट्स बोलते हैं। तो इसलिए विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट, विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट। दैट इज वाई विटामिन सी इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ द कैल्शियम इनटू द बॉडी। तो उसे बोन स्ट्रक्चर भी बनता है। Then यहाँ पे our finance minister Nirmala Sitharaman is talking about how government will strengthen the agriculture and manufacturing sector. It is talking about center's priorities, including the modernization post-harvest practices to boost the agriculture ecosystem and also pushing manufacturing in the sunrise industries. So sunrise industries होती हैं renewable energy, semiconductor sector, then material sciences, earth sciences and space industries.
ये हमारे हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। इसके अलावा इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 7% in financial year 24. If you would like to add anything in this. Sunrise sector are those sector where the chances of growth is maximum, and a new arising sector is called sunrise sector. Sunrise sector. तो इसमें भी लिखा हुआ सनराइज sector, semiconductor, renewable source of energy, material science, all these is right. So जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो भी आई थिंक सनराइज सेक्टर में आएगा। हम्म प्रेसिजन मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग पार्क, सब सनराइज सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज एंड इट नीड्स टू बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली। एनजीटी यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग बॉडी की हम बात कर सकते हैं। 1996 एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इंडियन इन्वायरमेंटल jurisprudence of compensation, यहाँ पे Vellore Citizen Forum had approached the judiciary seeking the protection from release of effluents by ये मतलब एक केस था जो कि आया था। इसके बाद फिर हमने ये जो कॉन्सेप्ट है हम लेके आए पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन हम बात करते हैं ट्विन रेमेडियल प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वाज इंटरप्रेटेड एज द नीड फॉर स्टैट्यूटरी बॉडीज टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड देन पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज यूनिवर्सली अप्लाइड। सो इन दोनों प्रिंसिपल्स में डिफरेंस या सिमिलैरिटी क्या है? तो इन इसमें द अगर प्रिकॉशनरी इसमें बोला जाए तो अर्लियर 1986 में EPA, Environment Protection Act, it was formulated for the conservation and preservation of environment. But after that, there was certain protest with regarding to the who will going to regulate the environment conservation and preservation. For that, this 1990 case is important. Vellore Citizen Forum is GS paper 2, GS paper 4. And regarding to polluters pay principle, that is polluting agencies, industry has the responsibility and should be made accountable for its own non-treatable effluent, that is they are pumping to the river system or even the landfill etc. तो पॉल्यूटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबल है, इसलिए वो पे करेंगे। इट इज यूनिवर्सली अप्लाइड। इसलिए अगर बोला जाता है 2011, 17, 18 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेज, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, all these have EPR, extended producer responsibility. It is based on this principle, polluter based principle. जो आप पोल्यूट कर रहे हैं उनके उनके ऊपर ही होना चाहिए ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ऑल्सो ये रियो डिक्लेरेशन का भी पार्ट है 1992 पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एनजीटी ने कैसे इन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए Bihar government was also asked to shell out compensation of 4,000 crore for violating laws for managing solid and liquid waste. And एक और केस में NTPC was also asked to bear the costs of violating waste disposal rules in Uttarakhand. So कैसे दूसरी authorities को गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल रख रहा है। तो ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, नीचे में लिखा हुआ है कि टेंडेंसी टू पास एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मैं करूं और उसका बाकी सोसाइटी भुगते, इसलिए लिखा इंश्योर्स दैट कॉस्ट आर बोर्न बाय जस्ट पॉल्यूटर, जो पॉल्यूट कर रहे हैं उन्हीं पर कॉस्ट होना चाहिए। तो एनजीटी अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कोटेशन कोट एंड कोट लिख सकते हो। You can take this one, I will just be back. General insurance companies could be recapitalized in FY25. Recapitalization is important to make them more just and equitable for the society. And further, capital infusion will help them to gain the financial health, because इंडिया के पास दो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ऑलरेडी in India only 2 to 2.5% people are associated with the insurance sector. So we have to promote that. For that,
role of IRDAI is important. It is statutory body that regulates the insurance companies and the standard in India. Strategic disinvestment of banks. Strategic disinvestment, it is a term. It it states that if the government sells its stake to below 50%, then it is called a strategic disinvestment. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास चल जाता है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन. So since the parliament has amended the General Insurance Business Nationalization Act, allowing it to dilute its stake to general insurer below 51%. Right now, general insurance company comprises 27 companies, 4 PSU and 23 private players. तो it is data दिए हुए. तो बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि स्टिल जनरल इंश्योरेंस में लोगों का एक अवेयरनेस बहुत कम है. हेल्थ में तो है ही, क्योंकि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMJY जन आरोग्य योजना, विद रिगार्ड टू जनरल इंश्योरेंस इट इज 2 to 5%. तो उसको बढ़ाना चाहिए. और यहाँ पे मेंशन्ड है कि लिखा हुआ है ना रेशियो, मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो कितना मेंटेन करना चाहिए, इट शुड बी 1.5. सो व्हाट डज इट इंडिकेट? तो मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो मतलब जो लॉन्ग टर्म डेट है कंपनीज के, उसको मीट करने के लिए क्या कंपनी के पास इनफ कैश फ्लोज हैं, तो ये उस चीज को इंडिकेट करता है. प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, CIG plus X minus I, it is part of GDP. Private consumption is very important for the powerful engine for the Indian economy. तो ये एक सर्वे हुआ था, इसमें बताया था 50% had positive outlook of the economy. So we can say that private consumption is increasing and there is a healthy trend in the economy. It is important for the growth of FMCG sector. एंड जो कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस है, हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, तो उसके क्या फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स यही है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो दैट रिफ्लेक्ट्स कंज्यूमर्स confidence is increasing in the economy. It reflects their income is increasing. That is why they're able to spend more. They're having enough savings with them. That is why they can spend that money. तो जो disposable income की हम बात करते हैं. So that is a part of we can say the measure to know about consumer confidence. और जो सर्वे कराए जाते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हाउ देयर सेविंग्स, देयर इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दैट इज चेंजिंग. तो उन सर्वे से हमें पता लगता है एक्चुअली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का. Okay. Has the economy improved in the NDA second term? So we can say in the second term, 2019 onwards, there has been a pandemic, 2020, 21, 22. Despite that, the economy has increased from 2.5 trillion, 2.4 trillion to 3.9 trillion. We can say that average GDP growth is 7%, 7.3%, and big जो Fitch हो गए, global Fitch, Standard and Poor, they are maintaining that India will grow around 7 to 8% in coming 2 to 3 years also. With regarding the GST, recently India has in India the corporate tax and GST tax it has increased to 1.5 lakh crore. Earlier it was below 90 or 70,000 crore per month. So GST collection has increased and private consumption has रिकवरी वाज के शेप्ड वन. सो के शेप्ड रिकवरी में क्या फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स नहीं है करुणा, इसमें हमने पहले बात करी थी वी शेप्ड और के शेप्ड रिकवरी में. तो वी में सडन डाउनफॉल होता है एंड सडन रिकवरी होती है उसी स्पीड से या उससे ज्यादा भी हो सकती है. के शेप में यूनिफॉर्म रिकवरी नहीं है. कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, जल्दी रिकवर कर लेंगे, कुछ जो प्री पैंडेमिक टाइम पीरियड है उससे भी पुअर स्टेट में होंगे. तो इसलिए वो एक मिक्स्ड हो गया, मिक्स्ड रिकवरी मॉडल. फॉर एग्जाम्पल उसको हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSC में कम रिकवरी हो एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर. तो
उसमें केस सेफ बोल सकते हैं। तो with regarding to that, India is also investing in capital asset, for example Bharatmala, Gati Shakti, etc., so that sustained job creation is done. And for that, India is integrating the financial part of fintech part to the capital part, the capital expenditure. So all these things can denote that economy is improved in the India second term. और क्या बोल एंड सकते हैं? चैलेंजेस की बात करते हैं, तो इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंजेस में क्या फैक्टर्स रहे हैं, मतलब क्या चैलेंजेस रहे हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में इन द लास्ट 5 years इफ वी टॉक? Global uncertainty, पहला एक challenge है, that is leading to the import inflation and increase of the inflation due to the high energy prices. Second would be challenges brought in by the GST and maintaining the sustained flow of the GST collection. एक challenge है. फिर job issue regarding skilling upskilling, that is a challenge because in the MSME sector Informal they sector are की very बात करेंगे. informal MSME sector. So to make it formal, and this is a challenge. Third, fourth, agri crisis in specific areas of the country due to the erratic rainfall and farm distress, etc. Four challenges. Fifth one, एंड आल्सो not इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप yes. तो ये 3-4 challenges है इंडिया का. रिगार्डिंग रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स. बैंकिंग सेक्टर की भी बात करें तो बिफोर अगर आप बोलोगे लास्ट 5 years में, तो वी आर सीइंग ट्रेंड की तो बात करते तो ग्रॉस एनपीएस दे हैव बीन डिक्लाइनिंग, सो दैट इज वन वी कैन से चैलेंज ओनली इन रिड्यूसिंग दैट जीएनपीए. देन वी कैन टॉक तो अबाउट अगर डेटा हम सिक्योरिटी. जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं तो उसका भी तो इम्पैक्ट डायरेक्टली आएगा इंडियन इकोनॉमी. Yes, that was mentioned by Oshik. That was the very first point. External factors, geopolitical situation, specifically where we are import dependent. हाँ. तो इम्पोर्ट Extreme weather, डिपेंड. spikes in wholesale retail prices of food, inflation, headline inflation, सब में impact होता है agriculture sector में. Uncertainty of the weather, bans of the export and intervention by the state via FCI and use of ECA under 1955 Act. We have seen in ethanol, sugar, not to use sugarcane in ethanol production, to curb the export of the wheat, onion, and other tomatoes, etc. That is leading to the rise of price. Another factor we can say is the investment rate has been stagnant at 30%. So that has been declining. We also talked about the tax to GDP ratio that has started to decline after 2013-14. So at one point of time it was at 17%, then it reached to 11 or 10% now. Prasanna Balachandra Varale shown in as a SC judge. He is appointed by the use of SC collegium. In collegium system, 5 judges there, so Chief Justice of India and senior most judges. And while appointing, he was termed as unimpeachable conduct and integrity. So unimpeachable conduct and integrity. Raising the Dalit representation of the bench to 3. So this showcases the equity in approach regarding the representation of the judges of the communities in the higher judiciary. ED state tussle. SC moots mechanism to identify vendetta. ED, with regard to ED, it derives its power from PMLA Act 2002, FCRA, FEMA, and we have discussed yesterday in PTQ. It cannot take suo motu action. ED. It can only take after the center has given some certain direction and finance ministry has given it certain direction. Suo motu action नहीं ले सकते. ऐसे E just like FIR and the police station, ED के लिए ECIR होता है. According to the recent amendment made in 2020-21 regarding the PMLA, ED power has increased, leading to the state and center tussle
between the power of the ED. Justice K.V. Viswanathan, Supreme Court, have said that we should explore fair and transparent mechanism body which will look into interstate ramification and keep intact the object of punishing the guilty while preventing vindictive arrest. So the question is arising over the use of ED for settling political score. Bangladesh rebel being trained in Mizoram camp. Bangladesh rebel, that is Azwal based peace accord, MNF. They are talking about the region separatism in the northern part of the Bangladesh, and they are being trained in district of Mizoram, Lungay and Mamit district. Parvatiya Chattogram Jan Samhati Samiti, an organization of Chakma rebels, Chakma tribe. In Bangladesh, Sittagong Hill Tracks is conducting the training. So from this, we can state that this can be a major roadblock between India and Bangladesh in the peace process and normalization of the region. Focus of EU-India FTA talks shift to services and investment. So what are the certain challenges between EU and India? EU is a EU is a collection of developed countries, whereas India is a developing country, leader of the global south. India is very sensitive with MSME and Indian farmers, safeguarding India farm. That is why India has not joined RCEP, that is Asian-led regional comprehensive economic partnership. Key issue between India and EU is CBAM, that is carbon tax that is being implemented by the EU. Second is student visa. Third is extra tax on steel industry, agriculture product. IPR issue. India talks about generic medicine. India talks about the peace clause in WTO, whereas EU talks about IPR standard, maintaining the IPR standard in spite of COVID-19 crisis. Then regarding the GI safe standard, so all these will be negotiated between India and EU, and there will be a comprehensive FTA, free trade agreement. So right now, free trade agreement have been signed with Japan and other countries. CEPA is a larger form of FTA, जो अभी sign हुआ with Switzerland, UAE, and ECTA with Australia. एंड जो टैरिफ बैरियर्स है बिटवीन ईयू एंड इंडिया उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे ईयू ने बहुत हाई टैरिफ्स लगाए थे कुछ कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पे. टैरिफ बैरियर दो टाइप से होते हैं. एक आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, काउंटरवेलिंग ड्यूटी. दूसरे जो है फाइटोसैनिटरी मेजर्स. EU most of the time uses phytosanitary measures. It says that the product that is coming out of India does not meet the standard as proposed by the EU. तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है एक तरह से, दैट इज जस्टिफाइड. लेकिन ये जो डेवलप कंट्री है ये ज्यादा यूज करते हैं अगेंस्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. Or one more tariff barrier that we've been talking about is the carbon border adjustment mechanism. टैक्स की बात कर ली स्टार्टिंग में, जो मेजर पॉइंट ऑफ CBA है. रेड सी क्राइसिस में हर्ट कंपनीज बूस्ट इन्फ्लेशन. 3 चोक पॉइंट जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज रेड सी रीजन नियर द दीबाउती स्टेट ऑफ बाबल मंडे, वहां पर. देन मलक्का स्टेट ऑफ मलक्का इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया. स्टेट ऑफ हॉर्मूज इन द पर्शियन गल्फ. तो 3 choke point. It is very important for the India to maintain a vigil on this region. और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द इंडियन ओशन, उसके लिए एक इंडो
को उठाना चाहिए कुछ कदम. फॉर एग्जाम्पल एंटी पायरेसी चेक इन दैट रीजन, अरेबियन सी, collaborating with the neighborhood region in the Indian Ocean region, Mauritius, Somalia, Madagascar, for checking the piracy, and also using radar and other sonar technique by the destroyer and submarine to check the Chinese influence in the Indian Ocean region. तो ये कुछ हो गया And क्योंकि there's one more strait, Palk Strait between India and Sri Lanka. पाक स्ट्रेट, लेकिन वो चोक पॉइंट नहीं है ना, स्ट्रेट है. लेकिन हाँ हो भी सकता है, मतलब अगर उसको भी ब्लॉक किया जाए तो तो नीचे चल मतलब ये लेंगे. सारे सराउंडिंग स्ट्रेट्स हो गए. हाँ मतलब जो मेजर जहां से चोक पॉइंट वही डिस्क्राइब होता है कि अगर उसको रोक दिए तो ऑल्टरनेटिव रूट ही नहीं है आपके पास, तो या तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, मलक्का तो इसलिए स्ट्रेट, ऑल्टरनेटिव टू मलक्का स्ट्रेट हमने बात करी थी, स्ट्रोम्बोली. नीचे से, स्ट्रोम्बोल लेकिन इट विल, रेड सी भी तो नीचे से आप जा सकते हो ओवरऑल केप ऑफ गुड होप से, लेकिन फिर वो महंगा हो हाँ जाता है विद रिस्पेक्ट टू द शिपिंग इंडस्ट्रीज. तो इंडिया एक्सपोर्ट एंड मिडिल ईस्ट रीजन, सुइज कैनाल अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट एंड 30% एक्सपोर्ट import. 95% of India's goods trade volume are shipped through sea. तो sea ईस्ट टू इंडिया एंड ईस्ट, इंडिया एंड वेस्ट, तभी ये चोक पॉइंट इंपॉर्टेंट. देन फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेट टू डिसेबल, जीएसए पर 2 सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स फॉर द पीडब्ल्यूडी विमेन एक्सेट्रा. इसमें आते हैं टू मेक डिसेबल पीपल, to make governance more equitable for the disabled PWD, the accessible of the government schemes for the social benefit and social benefit upliftment, because there is a shortage of staff, unavailability of the medical panels for the unique disability identification. We need to make sure that how many people are currently disabled. Data is required. For that, unique identification is important. तो फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेट देना चाहिए, तभी वो जा करके अप्लाई कर सकते हैं फॉर द जॉब, स्पेसिफिक जॉब्स in government and also in private sector. एंड यहाँ पे हम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हैं गवर्नमेंट के पास, कि एकदम से जब एप्लीकेशंस का नंबर बढ़ा तो इनफ स्टाफ एंड हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है. So regarding to in 26 January 1950, it was followed because of that Purna Swaraj and 1930. India's constitution heavily derives and from the 1935 Government of India Act. It became the supreme governing document of the country, and first fact है, 1950 parade was held in Arvind Amphitheatre opposite to Purana Killa, now known as Major Dhyanchand National Stadium. President Rajendra Prasad was present, and first chief guest was Indonesia's President Sukarno. First chief guest in Republic Day is Indonesia's president. Indonesia president और famous क्यों है सुकर्नो? क्योंकि he was a member of NAM, non-alignment movement. Bright arc of India and France tie. एक शब्द, one word that is defining the India and France ties. Strategic autonomy practiced by both the countries. India in the eastern global south, France in the European Union. France have not succumbed to pressure from US and UK in the European Union. It follows the same principle what India follows. Simple strategic autonomy. एक principle. बाकी फिर area of strategic partnership, that is why they are collaborating with each other in the Indian Ocean region and for the multipolar world. Multipolar world के लिए 3 कंट्री सिर्फ है जो वर्ल्ड वाइड फोकस करते हैं, एक इंडिया, रशिया एंड फ्रांस. चाइना और यूएस, दे चाइना यूनिपोलर, चाइना talks about bipolar world mostly and unipolar because of its long term objective of being a middle kingdom. US talks about unipolar and bipolar. तो
25 years of strategic partnership. In spite of use of nuclear weapon by India 1998 Pokhran, France did not condemn India that time. France has always stood by India with regarding to crisis, and it has always criticized Pakistan for support of non-state actors in India. The major pillars for cooperation: डिफेंस, अगर सोचते एक सेकंड में तो फिर मिराज 2000, राफेल एंड जेट इंजन का बात कर सकते हैं. डिफेंस डायलॉग, इट इज करेंटली हेड बिटवीन द टू कंट्रीज. स्पेस के लिए CNES, जाक्सा जैसे जापान को होता है, इसरो इंडिया, वैसे ही इसरो एंड CNES, they are major supplier of the component and equipment for the space program. We always talk about civil nuclear cooperation that is led by US in 2005, but ultimately on the ground level, India and France is maintaining a very good relationship with regarding to the civil nuclear cooperation. Jadpur nuclear power plant में भी progress हो रहा है. And second is small modular reactor, advanced modular reactor is being currently laid under the partnership between the two countries. Small modular reactor, छोटे reactor. Economic में बोला जाए, FDI is $10 billion, and mostly India export includes engineering goods, pharmaceutical, petroleum, electronics, etc. That has to increase over the years. Digital में अगर बोला जाए तो France is the first European country to adopt UPI as a part of DG stack of India stack. Approximately 10,000 Indian students study in France, and Indian vision में भी उनको आसानी होता है. फिर बोला जाए टूरिज्म में भी 2.5 lakh of French have traveled to India, when while about 7 lakh Indian travel to France for tourism. Rajasthan is leading India destination for French tourists, और इसी कारण राजस्थान, इसी कारण प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुलाया गया जयपुर में, राजस्थान, to make Rajasthan as a hub for the French tourist. तो अलग अलग अब है ये बात कर रही है इन स्पेसिफिक एरियाज: पार्टनरशिप, सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, पीपल, एजुकेशन, इकोनॉमिक, डिजिटल एक्सेट्रा. अब इंटरनेशनल फोरम, देयर इज a relationship between the France and India with regarding to UNSC security member and permanent security member. In France supports India. Second, France has supported India into entry of MTCR, Missile Technology Control Region. Australia group, and France also supports India for bid of NSG. India is not currently part of NSG. The membership is blockaded by China right now. तो तीन ग्रुप है इंपॉर्टेंट फॉर पीटी: MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड NSG. NSG एक लाइन बोला जाए, इट रेगुलेट्स द यूज ऑफ द न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड. यूनानिमस चाहिए, 35 कंट्रीज मेंबर है. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप is used for civil dual purpose use of the equipment. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप केमिकल से भी रिलेटेड है और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड है. MTCR स्पेसिफिकली मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल, तभी जाकर के ब्रह्मोस का लॉन्ग टर्म क्रूज मिसाइल का जो लॉन्ग टर्म टारगेट था, इट वाज बिलो 300. MTCR में होने के बाद इंडिया हैव इंक्रीज द टारगेट रेंज ऑफ द ब्रह्मोस टू मोर देन 450-500 kilometers. MTCR, the missile technology control region. So all these areas are very important for the Indo and France. GSA part 2, India's relationship between the major countries, with major countries. So regarding the history of French colonies in India, Puducherry, Karaikal, Yanam on the Coromandel coast, Mahe on the Malabar, and Chandnagar in Bengal. तो पुदुचेरी तो सबको पता है, माहे इन कोरोमंडल कोस्ट, माहे इन द मालाबार कोस्ट, Coromandel coast, and Chandanagar in Bengal. French colonial aspiration was very short-lived because of the French government intervening the aspiration of the Dupleix, who was a governor general of the French territory in India. French was the last one to arrive in India for the trading, and we can say that Dupleix was the first one
to implement the subsidiary alliance, proto-subsidiary alliance in 1760s during the Carnatic War. उसके बाद से ही फिर रॉबर्ट क्लाइव और बाकी वैरन हेस्टिंग ने यूज किया सब्सिडियरी अलायंस, और 1799 में पहली बार यूज किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ विलेस्ली, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. Michael Foucault related to the deconstruction theory in political science. Derrida, Michael Foucault. Iconic painting, Claude Monet, water lilies. The important keyword from this global risk stems from solution to earlier successes. Polycrisis, it is a situation where several crises meet and interact with each other to become a larger crisis. Far exceeds the sum of the each part. तो polycrisis को बोलते हैं. जैसे पहला एग्जाम बोला जाए तो पॉलीक्राइसिस वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, डिफरेंट क्राइसिस अफ्रीका के अंदर में, इन नॉर्थ, इन साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, सब मिल करके एक लार्जर क्राइसिस दैट वाज इन्वेजन ऑफ द जर्मनी इनटू द पोल 1930 में. कोल्ड वॉर भी बोल सकते हैं पॉलीक्राइसिस. तो टैकलिंग द पॉलीक्राइसिस, इंडिया नीड्स टू बी विजिलेंट about the mistake of the previous world order and take advantage of the new world order. New world order, that is integration of the global south into north through the multilateral institution reform, more inclusion of the African Union, more inclusion of the China, India and other Asian countries. तभी हो सकता है. और ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या हुआ? इट इज डोमिनेटेड बाय द वेस्ट एंड यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड. So overall, this comes into the GS paper 2 parliamentary rules and regulation. इसमें बात होता है कि विथ रिगार्डिंग टू द एमपीज अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ डिबेट एंड स्पीच इन पार्लियामेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी. फॉर ईच एमपी attendance is recorded, debates and questioning is also recorded. तो हर एक एमपी का दिया हुआ अटेंडेंस, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस and bills that has been promulgated by the each MP. और ये हाईलाइट होता है ऑन द वेबसाइट ऑफ द पार्लियामेंट. कोई भी पब्लिक जाके इसको देख सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने एमपी से कि उनका रोल क्या था इन द पार्लियामेंट, इफ ही इज परफॉर्मिंग ऑन द सेट स्टैंडर्ड बाय द पब्लिक और नॉट. Opposition is very important because of the critical stand taken by them on questioning the government on the major policy initiative or major crisis currently visible in the country. It maintains a vibrant democracy through spirit of inclusiveness, through